Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to talk about presentation 6, contrasting a little and a few. यानी a little और a few में क्या फ़र्क है? तो यहाँ किताब में they have said a little is used with non-countable noun. Non-countable noun के साथ a little इस्तेमाल होता है. It means a small amount. इसका मतलब है थोड़ा सा अमाउंट और नॉन काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है. द सेकंड वन, a few is used with countable noun. It means small number. और a few का माना है चंद तादाद. Usually between 2 and 5. 2 और 5 के दरमियान a few होते हैं. Number 1, what does sentence number 1 say? Christina speaks a little French. She knows a few words. Good. Christina speaks a little French. She knows a few words. थोड़ा सा फ्रेंच बोल सकता है और चंद अल्फाज का इनको इल्म है. तो अल्फाज शुमार होते हैं, इसमें वाहिद जमा होते हैं, तो यही फ्यू वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं. और फ्रेंच ज़ुबान तो अनकाउंटेबल है, सो अ लिटिल फ्रेंच. The second one say, Gino has only a little money in his pocket. He has only a few dollars. So little money, money mean रकम थोड़ा सा है और few dollar चंद डॉलर है उनके साथ. The third one say, they have a little time before their flight. A little time, थोड़ा सा वक्त है उनके फ्लाइट से पहले. They have a few minutes, चंद मिनट है. तो टाइम से पहले हमने few लगाया है और मिनट से पहले टाइम से पहले a little और मिनट से पहले few लगाए हैं. So here in this activity, dear students, we are talking about the difference between a little and a few. So far a little is concerned, in grammar point of view, a little is called adjective of quantity. ये quantity show करती है, मिक़दार show करती है, और qualitative adjective it is also called. Similarly, a little means some. A little means some, कुछ. And a little is used with non-countable noun. Non-countable noun के साथ इस्तेमाल होती है. For example, there is a little water in the jug. जग में थोड़ा सा पानी है. वाटर नॉन काउंटेबल है. एक चीज़ जो हमें वाज़ेह करनी चाहिए, a little and little. Little जो है, a little मीन इससे भी कम, इंतहाई कम. या सो अ लिटल मीन थोड़ा सा और लिटल मीन इससे भी कम, जो लिटल गिव नेगेटिव मीनिंग, जो मनफी के बराबर है. मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ देयर इज़ अ लिटल शुगर इन द किचन. अ लिटल शुगर मीन 2 किलो शुगर है या 3 किलो शुगर है. सो देयर इज़ अ लिटल शुगर इन द किचन. बट इफ आई से देयर इज़ अ लिटल शुगर इन द किचन, लिटल मीन हाफ किलो है या इससे भी कम है. इसी तरह अगर मैं कहूँ देयर इज़ अ लिटल वाटर इन द ग्लास में थोड़ा पानी है, तो ये मस्बत माना देता है कि गुज़ारा हाल है, मीन थोड़ा सा है. बट अगर मैं कहूँ देयर इज़ लिटल वाटर इन द ग्लास, so it gives negative meaning, it is equal to nothing, little. So a little और little में ये फ़र्क है कि a little में थोड़ा सा है और little में बिल्कुल मनफी के बराबर है, इतना कम है कि we can give, it gives negative meaning. And a little is used with non-countable noun. There is a little oil in the tanker, right? Similarly, there is a little water in the jug. Water non-countable है. There is a little money in my pockets. Money non-countable है. So non-countable noun के साथ a little या little हम इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह सेकंड वर्ड a few. A few mean चंद. A little mean थोड़ा. Little का माना क्या है ब्रदर? थोड़ा. और few mean चंद. So चंद, a few in grammar point of view is called numeral adjective or adjective of number. अददी इसमें सिफत it is called. And a few means some. इसका माना है कुछ. दोनों का माना एक जैसे है, लेकिन एक आदात को जाहिर करते हैं और दूसरा मिक़दार को जाहिर करते हैं. Right? And a few is used with plural countable noun. few के बाद प्लूरल आएंगे. और यहाँ पर किताब में तो हमने पढ़ा कि few मीन जो 2 और 5 के दरमियान हो, मतलब चंद हो. For example, there are a few students in the class. ये plural, there are a few students in the class, right? There are a few selling pens in this school. चंद selling pen है,
मतलब बहुत कम है, राइट, अ फ्यू। और फ्यू और फ्यू में भी यही फ़र्क है, जब फ्यू इस्तेमाल हो जाए तो ये मनफी माना देते हैं, और ये बहरहाल माना तो पॉजिटिव देता है। देयर आर फ्यू ट्रीज इन द गार्डन, चंद ट्रीज बाकी रह गए हैं, एंड देयर आर फ्यू ट्रीज इन द गार्डन मीन तकरीबन ख़त्म हो गया है गार्डन, और ट्रीज बिल्कुल मनफी के बराबर है, राइट। सो अ फ्यू और फ्यू में और अ लिटल में यही फ़र्क है। Or we will use a few with the plural countable noun. We will use little or a little with non-countable noun. So that is the main difference. Now let's do the exercise. Practice 7 says, make sentences using a little or a few. Gino and Christina are taking only 2 suitcase luggage. So how can they have used? They are taking a little luggage. What's the first one say? ड्रेसेस। सो क्रिस्टीना पेक्ड अ फ्यू ड्रेसेस। ड्रेसेस जब वाहिद जमा आती हो जिस चीज़ में और जमा पाम में हो तो यू शुड नो दैट इट इज काउंटेबल, सो देन वी शुड यूज अ फ्यू। सो क्रिस्टीना फेक्ड अ फ्यू ड्रेसेस। द सेकंड वन, good. So the Liani will stay in Ferris for a few days. Days is also countable, so for a few days. The third one, they have 1 day to visit museum. good. So they have a time, then they have given in the bracket time, so you should use time. So time is uncountable noun, so we will use they have a little time to visit museum. A little time to visit museum. Next one, they have a few hours to go sightseeing before they leave. good. So then they have given you should use pre-time. So time is also non-countable. So they have a little time to go sightseeing before they leave for Italy. Next one. Christina learned a few Italian words before. गुड। सो इटालियन है, ज़ुबान है, तो ये भी नॉन काउंटेबल है। सो क्रिस्टीना लर्नड अ लिटिल इटालियन बिफोर हर ट्रिप। नेक्स्ट वन, She plans to visit गुड। गिफ्ट्स है, तो गिफ्ट्स तो प्लूरल है, सो शी प्लान्स टू बाई अ फ्यू गिफ्ट्स इन नेपाल। 2 or 3 गिफ्ट्स, सो अ फ्यू गिफ्ट्स इन नेपाल, क्योंकि गिफ्ट्स प्लूरल है तो इससे पहले हम फ्यू लगाएंगे। 7 नंबर 8 नंबर 7, Christina wants to send some postcards to the गुड। पोस्ट कार्ड्स भी प्लूरल में उन्होंने लिखा है, सो क्रिस्टीना वाना सेंड अ फ्यू पोस्ट कार्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अ फ्यू लिख लेंगे क्योंकि पोस्ट कार्ड इज प्लूरल नाउन। 8 नंबर, Gino wants to buy a necklace and some earrings for गुड। Christina. ज्वेलरी, सो ज्वेलरी नॉन काउंटेबल है, सो क्रिस्टीना वाना सॉरी जीनो वाना बाई अ लिटिल ज्वेलरी for Christina. A little jewelry for Christina. Next one, the 9 number. Buy a Richard bought 4 books in English. Go to books in English. So books countable है तो हम few लगाएंगे। Fire and Blood bought his children a few books in English. Last one. Elena will be in for 4 days. Good. So days है, days also countable. So Christina will be in Nairobi for a few days. 4 days. So 4 days are also a few days, for a few days, right? And come to the next one, brother. Practice 8 is also related to it. Milk. So what does A say? Would you like some milk? Would you like some milk? Yes, please. I'd like a little. I'd like a little. Question है, would you like some milk? Would you like some? And then you will say, if it is non-countable noun, so आप जवाब में कहेंगे कि yes please I'd like a little non-countable के साथ, और countable के साथ you will say yes please I'd like a few countable noun के साथ, right brother? Yes please I'd like a little or a few. So come to the first one. Would you like some grapes? Yes please. I'd like
a few. Grapes के दाने तो हम शुमार कर सकते हैं. So yes, please, I'd like a few. The second one, would you like some salad? Yes, please. I like. Good. Yes, please, I'd like a little. Salad non-countable है. So I'd like a little. Third question, would you like some crackers? Crackers mean biscuit. कुछ बिस्किट खाएंगे. जमा सूरत में उन्होंने लिखा है. Yes, please. I like a few. A few. Yes, please, I'd like a few. Fourth one, would you like some cheese? Cheese non-countable है, तो कैसे लगाएंगे? Yes, please. I like a little. A little, non-countable है. Fifth number, would you like some spaghetti? Spaghetti is also non-countable. Yes, please. I like a little. A little. Now you ask me about the pepper. Would you like some paper? Yes, please, I'd like a few. Mean peppers are countable. We can count a one pepper, two pepper, and if it is crushed pepper, so then we will say yes, please, I'd like a little. 7 number. Would you like some tea? Yes, please, I'd like a little, because tea is non-countable noun, so a little we will use. 8 number. Would you like some French fries? Yes, please, I'd like a few. French fries are also we can count. And if it come in the non-countable noun, so then we can say that yes, please, I'd like a little. But a few fries, they have written in plural form. Next, 9 number. Would you like some coffee? Yes, please, I'd like a little. Copy is non-countable, so a little we will say. 10 number. Would you like some tomato slice? Yes, please, I'd like a few. Slice is one slice, two slice, so plural. So yes, please, I'd like a few. So I hope you will have learned this one, dear student. Try to listen it again and again, and try to learn the difference between a little and a few. Similarly, little and few. What's the difference between a little and a few, and a little and a few and few? Through practice you will learn that. And don't forget to remember me in your prayer. Thank you so much. Khuda Hafiz.